Hello everyone. Today we are going to discuss degrees of comparison, which is A5 exercise of lesson number 5, that is the rich lady and the artist. So dear children, a table has been given in your book in the exercise part, that is A5, that you have to complete the given table of degrees of comparisons or degrees of adjectives. Now first of all we should know what is an adjective. That I have already told you in my previous videos also, that an adjective is also known as a describing words which describes a quality, quantity of a noun or a pronoun in a sentence, or we can say that it tells what is the quality in, for example, color, other features whether it is tall or not, okay, but what is the color, what is the quantity, what is the number. So so such words which describes quality, quantity of or number of noun or pronoun in a sentence, they are called adjectives. Now next comes degrees of comparisons or degrees of adjectives. So dear children, adjectives have 3 degrees that compare one thing to another. So there are 3 kinds of comparison. 3 तरह से we can compare. First is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. So coming to the first one, that is positive degree. Dear children, we use positive degree when there is no comparison, when we are speaking of only one person or one thing. जब हम किसी एक के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम उसका comparison किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, then that is a positive degree. जैसे कि for example here, LeBron James is tall, the house is big, this flower is beautiful. So in the first sentence we are talking about James, that he is tall. In the second sentence we are talking about house. How is the house? It is big. And in the third sentence we are saying this flower is beautiful. So we are not comparing the this thing. We are talking only about the James in the first sentence, house in the second, and flower in the third. So we are not comparing. So this degree is called positive degree of comparison, where we are not comparing anybody with anything, or we are talking of only one person. Now second is comparative degree. Now what is a comparative degree? As you can well understand with the name only, comparative, we use comparative degree when we compare 2 nouns or pronouns or any 2 things. Okay? When we are comparing 2 things, then Yao Ming is taller than LeBron James. This house is bigger than that one. She is nicer than him. अब देख लो, जहाँ भी हम comparison कर रहे हैं, there is a word coming than, THAN, than. इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस कि जो याओ मिंग है वो लेब्रन जेम्स से ज़्यादा लंबा है, और ये जो हाउस है ये उस हाउस से ज़्यादा बड़ा है. एंड द थर्ड वन कि ये शी इज़ नाइसर, मतलब वो उससे ज़्यादा अच्छी है. सो वी आर कंपेयरिंग 2 persons और 2 things which with each other. So वहाँ पर जो डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं, that is comparative degree. It shows comparison between 2 persons or 2 things. So the third one is superlative degree. Superlative degree वो होती है बेटा when we compare more than 2 nouns or pronouns. It is used to compare more than 2 nouns or pronouns or things with the other ones. ठीक है. एंड इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. मतलब अगर हम कहेंगे यह कि पीटर इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, कि पीटर जो है क्लास का सबसे ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट लड़का है, तो इट मीन्स कि उससे ज़्यादा स्मार्ट क्लास में कोई नहीं है. तो इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज एलिस इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द नेबरहुड, एंड द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. तो हियर यू विल नोट डाउन वन पॉइंट कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं उससे पहले वी ऑलवेज यूज़ द इज़ यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे हम ये बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा
पीक है, तो उससे ऊंचा और पीक कोई नहीं है, ठीक है। सो जहाँ पर हम किसी एक को बताते हैं कि एक को हम बाकी सबसे कंपेयर कर रहे हैं ना, दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करने से पहले वी ऑलवेज यूज़ द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि 3 तरह की डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव इज़ दैट व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव जहाँ 2 चीज़ों के बीच या 2 पर्सन्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है। एंड सुपरलेटिव व्हेन 2 और मोर थिंग्स आर कंपेयर्ड, then we use superlative degree, and it is the highest degree of quality. So in your exercise 8.5, complete the following table of degrees of adjectives, ठीक है। So here you can see there are 3, हमने लिख दिया है positive, comparative और superlative degree, ठीक है। So first is clever, cleverer, cleverest. Second is near, nearer, nearest. Fat, fatter, fattest. Good, better, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Many, much, दोनों के लिए more, most. Big, bigger, biggest. Hot, hotter, hottest. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ जो है ER, EST पे कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ का बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे गुड, बैड, लिटिल का या मैनी या मच का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारे जो रूल्स हैं वाइल चेंजिंग अ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 5। अभी के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है और सुपरलेटिव में क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड दिस टेबल you have to write down in your notebooks also. So thank you so much. Have a good day.